Hello, Zoe. Uh, I'm using a screen recorder. I had few doubts. Um, yeah, sir. So we'll start, sir. So the doubts are actually scenario-based doubts only. Okay, what happens in live market? Because during live market, I'm all over the place usually. So these are the list of stocks. Are scenario based. Of course there are more stocks, but I'm trying to generalize them into one particular type of scenario. So here, if you see the usual scenarios are the usual scenario which I see is that a stock makes a high, makes a low, it gets absorbed. यहाँ पे it gets flattened, and यहाँ से sometimes we get a big move, but sometimes we don't get a big move and we get a box. So with this, I like to say the main objective for me is efficiency. So what I'm saying is that I should be efficient enough where जब स्टॉक निकलता है उसके एक दो दिन पहले ही मेरा बाय होना चाहिए. Not before that. I don't like to be in stock for more than 2 days. For now, at particular scenario, because I'm just starting out, so this is my efficiency. My objective is full efficiency. So here we see that यहाँ पे sometimes we if you see in Salazar the stock, यहाँ से you got a big move, but here in Star Papers it consolidated over the high, it broke the high. यहाँ पे it again consolidated, it gave a VCC and it gave a move. Here again we have scenarios. So first scenario will be like, first it gave you a move, it gave you a pullback. Second, it again went and tested the highs, consolidates and gives a move. Another scenario is that something like V12 type. यहाँ पे आपको reaction दिया, again it goes and tests the high, again it tests the support, वहाँ से it compress होके गया. So a lot of scenarios. So something like अभी ये star paper में this was one of the scenarios. In Patel Engineering, yeah, you see this scenario, sir, right? You get a high, you get this thing here. Again, the absorption happens at the high. Instead of even this, sometimes doesn't it look good? Like it will be like V25, 2050 का पे move दिया, 20 पे move दिया, price stayed above 10. So यहाँ पे भी it looks good ना, but then it goes and it tests these lows and यहाँ पे वो low test करके जाता है. Same thing happened in JK Tire earlier. Actually, 3 months back, I had the similar doubt in Crest. Yeah, यहाँ पे भी same हुआ सर. Came, got the high. यहाँ पे did not even test the highs. Suddenly इधर से ही वो VCC दिया, VCC यहाँ पे um, VCC, and suddenly it gives you a move. After the move, now certain stocks में move sustain होता है. Now यहाँ पे क्या हुआ? It gave you a move. Now this is what I was talking about in the first one, sir. It gives you a reaction कि एक कंसोलिडेशन आ गया. जैसे सेकंड कंसोलिडेशन आया, ये वापस नीचे नहीं गया, ये यहाँ पे ही इनसाइड बाज मार लिया. बट इन द स्टार पेपर वन वो सेकंड टाइम भी वापस नीचे सपोर्ट के वापस गया, जैसे पटेल इंजीनियरिंग गया. फ्रॉम यहाँ पे एक सपोर्ट आया, इट वेंट इन क्रैश्ड, इट जस्ट वेंट लाइक दैट. यू सीन सालासार, यहाँ पे आई शो यू सालासार. ऑफ कोर्स ये मंथली एसटीएफ था, ये आया मंथली पे भी ऑल्सो यू सी. या ये आया अब्जॉर्प्शन के बाद ये यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ. इन दिस के बाद इधर से यहाँ पे कंसोलिडेशन इसने दिया नहीं, इट जस्ट, और ये जो स्टॉक का जो प्राइस गया ये अलग ही लेवल पे गया. दिस वेंट समथिंग लाइक दिस. बट सर्टन अदर्स इवन हैविंग मंथली एसटीएफ वो उतना फास्ट जाता नहीं है. समथिंग लाइक, या नाउ इज SMLT. Yeah, इसमें ये same doubt, sir. So what happens is that of course daily, weekly and monthly can be something different. But यहाँ पे क्या हुआ ना sir, sometimes even I've seen in weekly this thing happening and sometimes I see in daily. यहाँ पे daily में हुआ, you got a move, CB candle, price fell. Suddenly you get a DC which gives a closing above. It's 10, your 10 moving average. Goes and absorbs. यहाँ पे absorption हुआ. You see next these two candles,
अभी यहाँ पे आप देखोगे ना, इनसाइड बार बना नहीं, और इनसाइड बार भी नहीं बना नहीं तो एटलीस्ट वो छोटू बार, वो वी सीन एक्सट्रीम कंप्रेशन, वो बना नहीं, एंड देन सडनली ऐसा एक कंप्रेशन आके नेक्स्ट डे इट गेव अ मूव. बट सर्टन अदर स्टॉक्स वी सी, यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा मूव आने के बाद दो तीन और स्मॉलर कैंडल्स दे गिव, एंड देन दे यू गेट दीज टाइप्स ऑफ मूव्स. सो ये भी एक डाउट आ रहा था सर, बिकॉज देयर वाज वन मोर, दिस वन SW Alex, या यहाँ पे इफ यू सी ऑन वीकली ये आया, अब्जॉर्प्शन वाज ठीक है, इट वाज ओकेश ऑनली, नॉट द बेस्ट. इट केम, इट गेव यू द अब्जॉर्प्शन, प्राइस टेस्ट हुआ. यूजुअली यहाँ पे एक दो हफ्ते का और वीकली बार आता है. व्हेन यू गेट अ 1 or 2 weeks का वीकली बार, then that means you have to wait for like 10 or 2 weeks, 10 days तक का एक move you have to wait on daily. But यहाँ पे if you see आया, it ठीक है, क्लोज गया, दिया अब्जॉर्प्शन दिया, एंड सडनली इट गेव यू मूव. बट सर्टन अदर स्टॉक्स वो दिया नहीं. Something like, if you even if you see in BCL type, BCL, yeah. If you see in BCL, ये आया, गया, आया. यूजुअली यहाँ से ठीक है, यहाँ से एक मूव आना चाहिए, बट ठीक है. So yeah, the crux was that we are being lost in scenario. So something like Goldium. Now is Goldium good? Because यहाँ पे एक मूव आया, यहाँ पे, isn't this a good area to buy for Goldium? Now your weekly is here. Yeah, this candle. Yeah, isn't this the best? Doesn't it look good? Came to 10-20 के बीच में, absorb the supply, gave you this bar. Now what happens is that it does this. ये नीचे आ जाता है, ये यहाँ तक अच्छा दिखता है, but then if you see ये थोड़ा टाइम ले लिया. बट इफ यू सी दैट SWLX उतना टाइम लिया नहीं. सो देयर इज समथिंग इन स्टॉक्स दैट इट, उनका वो टाइमिंग एस्पेक्ट है कि क्या, बिकॉज इवन आई वेंट इनटू टाइमिंग एस्पेक्ट ऑफ आर्ली, दोनों में कंसोलिडेट, पहले उसमें भी पहले से आर्ली में हो गया था इन गोल्डियम. बट यहाँ पे सर्टन स्टॉक्स यू सी सर्टन इनसाइड बर्स, सर्टन यू डोंट. So these were some scenario issues which I was facing. The other issue is the same. यहाँ पे on daily we were seeing that we're getting that I'll show you. You're getting this type of move. यहाँ पे आपका 10 is there, your 20 is there. This price comes between 10 and 20. Usually V1 to कैसे होता है, आता है, then 10 पे आता है, and then gives a move. Right. So, but now in certain stocks, certain scenarios, you see price आता है, गिरता है, you have your 10, you have your 20, और 20 तक आया, suddenly you get a move from 20, it breaks this high, and then वो जो 10 पे आता है, and it gives you a big move, and now you get a big, really big move. ये भी एक सिनेरियो इज, I'm seeing these types of scenarios कि ये जो कंसोलिडेशन होता है वो इस हाई पे होता नहीं है. It happens and goes and it creates base on base types of structures. Something like Sundaram Fasteners में यहाँ पे came 10-20 आया, हाई पे कंसोलिडेट हुआ, ब्रेकिंग disturbing the structure, and something like that वो हुआ. Even यहाँ पे भी same, it's happening here, but similar type of structures happening. Yeah, QSL में doubt was yeah, the same one, वो SWLX का इतना मस्त कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पे. You got a move weekly, 20 पे मूव आया, 10 पे मूव आना चाहिए था. The supply is absorbed, it went near these types of highs, गया, absorb the whatever selling it has to do, support क्या पे support लिया. Now after taking the support, यहाँ पे या देन अ स्ट्रेट मूव वो नहीं आया जैसे SWLX में आया, जैसे सालासार में आया. यू गेटिंग द स्ट्रेट पावरफुल मूव्स. बट यहाँ पे वो पावरफुल मूव आया नहीं, जिसमें आप द मेन क्रक्स व्हिच वी सी फॉर पावरफुल मूव्स और बिग एक्सपेंशंस इज दैट वी सी ऑन मंथली एंड वीकली STF. ठीक है, probably because of this QSL में नहीं होगा, बट देन या स्टार पेपर में वो सॉरी या द क्रेस्ट में वो वैसा वाला मूव आया नहीं. समथिंग लाइक हाई वो आया, कंसोलिडेट्स हियर, इट डिड नॉट कंसोलिडेट्स हियर. सो द सिनेरियो बेसिस यही है.
कि आई वाज थिंकिंग कि ये रेंज के बाद फर्स्ट ब्रेकआउट है, इसके लिए वो एक ही बार पुल बैक दिया. कैन वी इवन क्वांटिफाई दिस थिंग कि कंसोलिडेशन में ये ऊपर गया, ये द कंसोलिडेशन फॉल हुआ, सडनली यू आर गेटिंग दिस अप मूव. यहाँ पे यू सीइंग इनसाइड बार्स, और ये इनसाइड बार्स भी बहुत फास्ट था. समटाइम्स यहाँ पे इनसाइड बार करने के बाद देयर आर टाइम्स व्हेन suddenly your stock gives you another a red candle here. It gives you, then it gives you another pullback type correction, and then from here it gives you the move. So ये भी एक पॉसिबिलिटी होता है, बट देन यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी हमने वो देखा नहीं. सो एंड अदर स्टॉक्स में भी आर सीइंग दोज टाइप्स ऑफ आता है, एंड समथिंग लाइक पटेल इंजीनियरिंग या वैसे स्टार पेपर. only scenario is doubt, something like ये रेंज में आया आया सडनली सप्लाइंग यहाँ पे फिर से आया. ठीक है, प्रॉब्ली यहाँ पे इनसाइड बार बना नहीं, बट देन व्हेन इट gave here and made few inside bars, one or two compression type, and it gives you the move. BCL also, I did not purchase, I had a buy, but I again sold it the next minute because I was seeing कि अगर ये MS के यहाँ पे आ जाए तो बेटर रहता है. बट स्टिल डज ये मेरे को अभी भी अच्छा लगता है, एंड आई एम एंग्विशनेस में रहता है, नॉट एबल टू टेक द डिसीजन कि सही लेना था कि नहीं लेना था. यहाँ पे भी इफ यू सी इन वीकली कंसोलिडेशन आया, अब्जॉर्प्शन हुआ. I used to call this the concept of last sell, and then you're getting this consolidation again. Third time you consolidate होके आ रहा है. So where was the good buy? मतलब how, मतलब यहाँ पे why would I have bought? Should I buy here? Of course near the MS वो end में मालूम पड़ता है कि ठीक है, after you wait, you get that near the MM move, then you feel that कि ठीक है ये अच्छा move था. But again the main objective अगर efficiency का होता है, then यहाँ से भी एक move आ सकता है. So these types of angushness during live market I am facing a lot. जैसे कि मैंने आपको गोल्डियम का भी बताया था कि गोल्डियम में this is, yeah, this looks a really good buy. Absorb भी हो रहा है, 25 50 पे आया, 20 पे आया, 10 पे आया. Then suddenly you see that ये फिर से consolidate किया. It tried to test this highs, you got the thing, but this did not break. Again the price is above 10 and now it looks good. So वो end में आ रहा है, but यहाँ पे मैं ले लेता ना एंट्री, बिकॉज यहाँ पे भी वो कर्व आ जाता है वो 10 मूविंग एवरेज का, and yeah, I could have targeted the highs, but if I have taken here I would have wasted so much of my time. My stop loss is definitely 20, ठीक है, 10% का एक stop loss hit हो जाता है, 10% का वो बफर आ जाता है यहाँ पे, and ये ट्रेड फेल हो जाता है यहाँ पे because my buy would have been here. So these are some of the doubts which I'm facing. So yeah, and there are many more doubts as well. Like early entries का मैंने आपको बताया, जो crest का type का जो structure है, this type, is it finding the relatability in other types of something like NIIT maybe वो आया गया, and something of course inside bars would be better, but again value wise entry भी एक better हो जाता है, because in crest में I guess not in crest, I'm really sorry, star में your entry, better entries would have been यहाँ पे would have been a better entry, but this would have been the best efficiency wise, and I'm only looking for efficiency wise. So I guess looking for inside bars is what I'll be looking at. And but certain stocks you get like these types. And now with this structure in mind, also in the back of your mind you also have those CB numbers. Like we feel that CB abhi extended hua hai, should I take an entry or not? With this thing, I feel that focusing on one or two stocks, something like now there are definitely different scenarios, but certain stocks like these they just अगर इसमें अगर now if I of course we don't know कि ये जाएगा कि नहीं जाएगा इतना, because 3 to 5 में हम लोग यहाँ पे VC के ठीक है मंथली का हाई के यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन आना चाहिए, but certain stocks they just pick the momentum and they go. अगर इन्हीं stocks में entry exit होता है, यहाँ पे entries and exits here 3 to 5 का framework or probably DNA का framework, you buy here. So
you're focusing on one stocks, then it becomes easy, because now what happens is that मेरे को NIT में trade लेना है. uh, but my CV scan is extended. I feel that there can be some short. Of course, I can be agile, but ठीक है, you don't want to have that loss as well, uh, because actually I had recently had a loss in Bank Nifty, and of course that was a compulsive trade. Compulsive because uh, the person whose account I was trading, he was asking me, "Okay, what is happening in my account? Why aren't you getting some good trades?" Then he asked me about, what do you think of Bank Nifty, because I'm studying about stocks. So with that, I analyzed Bank Nifty and I started taking some few trades. Then I was abstaining myself from trading Bank Nifty, but he also asked me, "What do you think of Bank Nifty?" And my friend was also like, "Why don't you trade Bank Nifty?" Then um, yeah, it all, I know it looks sounds very silly, but yeah, I should have, be clear with my priorities. But I traded Bank Nifty and I had a big hit. So now another, even a small stop losses, it it won't be feasible for me. So I'm just trying to see कि how I can make things more efficient. वही पूरा plan है सर. दैट्स वाई ये पूरा एक डाउट्स का, और मेरे को पहले से करना था, ये डाउट्स का बहुत सारे डाउट्स है. या तो वही है सर, सर्टन थिंग्स गो फास्ट, सर्टन थिंग्स लाइक समथिंग लाइक सालासार एक बड़ा आ जाता है, इवन हैविंग ए मंथली एसटीएफ, बट सर्टन मंथली एसटीएफ में नहीं आता. सर्टन क्रैश टाइप में वो हाइस पे कंसोलिडेट करता है, कोई थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है, और प्रोबेबली दे डोंट कंसोलिडेट द हाइस, बिलो द हाइस या यहाँ पे कंसोलिडेट होता है, एंड देन इट गोज. तो वही सिनेरियो बेस्ड डाउट्स है सर. And also, you told me in earlier sessions that about आर्ली का मैंने आपको एक ऑब्जर्वेशन बोला था, um, about डेली गोइंग. अभी डेली में ऐसा मूव आया. I mentioned about confirmation, but ठीक है, तो यहाँ पे now what happens is that ठीक है, ये गया, absorption of supply came here, gave support, you got some few DCs. अभी now it will consolidate here. So certain में क्या होता है कि consolidation बहुत small होता है, and certain में जो early consolidation होता है वो कभी कभी big रहता है. Sometimes what happens is that your price ऐसे जाता है. I'm not recollecting actually the stock, मैंने वो prepare किया हुआ था. Now certain stocks ऐसा ही रहता है. अभी if you see on daily, there will be some inside bars over here now, but relativity wise, if you see, but you told me कि hourly पे देखना, it's futile. There are certain times where जैसे कि वो अपन वो करते हैं ना, 50 20 and 10, and then from 10 पे वो big move आता है, but hourly में भी वो वैसा है सर. Yes, there are times when 10 पे अच्छा मूव आता है, बट ऑल्सो देर आर टाइम्स जहाँ पे वैल्यू जोन्स बनते हैं, जहाँ पे अगर एक आर्ली में अगर यू गेटिंग अ मूव हियर, यू फर्स्ट यहाँ पे बाय पॉइंट आता है बिलो 2050, इट गोज नियर द हाइस, एंड देन फिर से वो वैल्यू जोन 10-20 पे आता है, एंड फ्रॉम देयर ऑल्सो यू गेट अ मूव. सो ये सब भी होता है, बट आई वाज जस्ट लुकिंग कि अगर इसको भी हम लोग क्वान्टिफाई कर सकते हैं, it becomes very easy, logically, or easy भी रहता है, to work into a system type कि ऐसा करना फिर वैसा करना. It also gives some clarity during live markets. Usually वो बहुत mess up हो जाता है. Sometimes your सीन होता है कि और स्ट्रेच हो सकता है, समटाइम्स होता है कि और स्ट्रेच होता है, बट जो जहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है, इट लुक्स लाइक ठीक है, होल्ड कर सकते हैं. इवन आफ्टर योर स्टॉप लॉस गेट्स हिट, वी फील लाइक कि ठीक है और होल्ड कर सकते हैं, बट बाय द टाइम वो स्ट्रेच आ जाता है, एंड फ्रॉम उधर से अगर वो नीचे अगर आ जाता है, देन इट हैपेंस टू बी अ बिग हिट. सो दीज आर द problems. I know certain things where I'm being stuck. So yeah, so it's all about that. Probably I might be taking a trade in BCL Industries. It's looking something like something like this, intense technology. Okay, you get a move highs यहाँ पे, and suddenly you get a move from here like Salasar,
and certain stocks they come here, they again give one leg here, and then they give the move. So because yeah, so yeah, these scenarios doubts I'm having. The Salazar, you won't believe, I had looked here, but then I was like, I'll wait for it to come here and then give me a last leg that will give me more efficiently wise. But you won't believe this inside bar was the area which I was looking at, and would say, it just never stopped. ये यहाँ पे एक volatile candle दिया, which actually during live market अगर मैं होता ना, three candles top of the resistance, I would have exited. But then this trade, just happens to be one of the monster trades, like one of the best trades if I would have had. So the doubts are just like, certain trades, if even if I buy here, instead of 3 to 5, could have holded more. Certain trades not. Of course, everything depends upon the plan of, like, and we combining everything like DNA, location, all time highs pay. Probably you'll have new DNA, or strong DNA is happening. But still, the main objective which I said in the start of the video was about efficiency. So how do we uh, make sure that we are efficient enough, where you don't feel that you are wasting much more time. Even similar to this I am having was Rico Auto, which was same similar monthly का पूरा बड़ा ये range है monthly में. And I founded Rico Auto यहाँ पे, ये gap up हुआ, it came into the CB scan, and I was thinking of buying here, but I did not buy. I don't know why. एंड या ठीक है, अभी ये हाई पे कर रहा है, वो अब्जॉर्प्शन हो रहा है, अब्जॉर्प्शन होगा, इसका जो लेग रहेगा प्रॉब्ली उसमें भी बाई कर सकते हैं फॉर द बिग मूव. बट सर, बैक इन द माइंड टू थिंग्स हैपन, लाइक तो सीबी स्कैन का एक्सटेंशन, ठीक है, व्हेन मूव्स बिग मूव्स हैपन इन सीबी स्कैन एक्सटेंशन, प्रॉब्ली जो 40 स्टॉक्स है अपने में, जो 18 140 आ रहा है, देन इट 160 140 के नंबर्स आ रहे हैं, देन इट हैपेंस टू बी स्प्रिंग इफेक्ट का 40 हो सकता है, तो प्रोबेबली अपना स्टॉक उसमें भी स्ट्रेंथ दिखा सकता है. Uh, ठीक है, एजिलिटी भी हो सकता है, बट स्टिल गेटिंग द मूव्स लाइक Salazar and being efficient enough, in holding the trades, and getting those big, at least not even big moves, मतलब I get like 40% move, it's really a big number for me. And efficiency wise also, I'm अच्छा, good number only. So yeah, this is what I was looking at, sir, discussing about these types of scenarios. Okay, there are something in these types of stocks, in probably these types of stocks, जो गैलेंट का भी ऐसे ही है, सिमिलर, मतलब एक थोड़ा डेली में रेंज था, which means that W was my SDF, and it gives you a first mover, which gives you 10% M10 type, and then suddenly you get like 20, 40. Actually, the high was 40, so 40% move. सो यहाँ पे मैंने ये भी बहुत देखा है, केपीआई ग्रीन एक्चुअली, मोस्ट ऑफ दी अभी जो ग्रीन सेक्टर था उसमें भी देखा था, आपका M10 होता है 13%, बट हियर यू गेट रियली स्टिकी. ये वाला एक्सेप्शन था कि इसमें अच्छा है, but there are times when you get like, you also get like, यहाँ पे 13% है, तो you get like 26-20% moves on after M10 happening. So yeah, I'm not clear with this thing, but I've seen these things happening. Or probably there are certain stocks which showcases these types of things, and there are certain types which just goes like DNA आप 13% आया, 13% आएगा, then V1 to 13%, V25. So, but ये type के structures, they bring really efficiency, मतलब 3-4 days, and you get really good numbers. I don't know how often they come, but they do come often. So मैंने बहुत सारा, I was scanning a lot of stocks, and these orange lists were the doubts are मतलब scenario types के, how do I generalize the scenario and everything. So uh, I try to organize much more better. I have some questions. Okay, for now I guess these were the ones. uh, will be any voice note is also fine. Whenever you आपको जब भी टाइम मिलता है तो आप do voice note डाल सकते हो. I'll upload this thing on my YouTube channel itself, so that it'll be easy for you to also see to it. Yeah, so about that. So yeah, thank you, and I'll definitely अगर ये scenarios की discussion के बाद I'll
yeah, I'll get much more clarity because I'm stucking at these places. We'll try to analyze stocks more. Yeah, thank you. Stock